There were the days in many Indian villages when life was coming to a standstill as soon as the sun sets. Food has to be cooked before it gets dark, and children have to finish their studies. The alternative was the dim light of kerosene lamps. Life in the village at night is not dull and dark. Now they are using fan and enjoying their television. वन स्टॉप सेंटर, महिला सशक्तिकरण की ओर एक कदम. In 2013, the Government of India announced the Nirbhaya Fund of Rs 10 billion to support women's empowerment, safety and security of women and girl children. From the Nirbhaya Fund, the Government of India launched one-stop center or Sakhi across the country. To date, there are one-stop centers across India and they have been able to help women. To help Indian women in distress across the globe, the Ministry of External Affairs collaborated with Ministry of Women and Child Development to set up one-stop center under the Nirbhaya Fund abroad. To begin with, 9 OSCs have been set up. Out of the 9 centers, 7 are with provision of shelter homes in Bahrain, Doha, Dubai, Kuwait, Muscat, Riyadh and Jeddah, and the other 2 are without shelter homes in Singapore and Toronto. कभी ये चेहरे मुरझाए हुए थे, 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती तो भूखे ही सो जाते थे। लेकिन संवेदनशील राजस्थान सरकार की अनोखी योजना से राज्य का हर एक गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति पेट भरकर मात्र 8 रुपए में पौष्टिक एवं स्वादिष्ट भोजन पा रहा। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को आदरांजलि के रूप में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण इंदिरा रसोई योजना शुरू की है। इंदिरा रसोई में 8 रुपए में हम खाना खा रहे हैं, स्वादिष्ट एवं पौष्टिक। इंदिरा रसोई योजना हेतु प्रतिदिन 1,34,000 व्यक्ति एवं प्रतिवर्ष 4 करोड़ 87 लाख लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य। भोजन में प्रति थाली मुख्य रूप से दाल चपाती, सब्जी एवं अचार सम्मिलित है। बाहर होटलों पे महंगा मिलता है, यहाँ पर अच्छा खाना मिलता है। कोई भी भूखा नहीं सोए के संकल्प को साकार करती राजस्थान सरकार। जाहोता बना राजस्थान का पहला ODF प्लस ग्राम। भारत सरकार एवं निदेशालय राजस्थान की टीम के द्वारा 30 जून 2021 को ग्राम जाहोता का संयुक्त रूप से अवलोकन कर ODF प्लस ग्राम घोषित किया गया। जिला जयपुर के ब्लॉक जालसू में स्थित ग्राम पंचायत जाहोता उत्साही युवा सरपंच श्याम प्रताप सिंह राठौड़ के नेतृत्व में ये लक्ष्य हासिल किया गया। उन्होंने 60 सदस्यों की युवा टीम के साथ समुदाय को विश्वास में लिया, योजना बनाई और धीरे धीरे कचरा प्रबंधन युक्त जाहोता बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। There are thousands of colors of nature, and the glow of colors is made in a beautiful temple where we humans express our happiness in our own way. Celebrations of any festival are also a unique part of our dreams and tradition. Fireworks occupy great importance in our cultural and social life in our country. Fireworks are the part of marriages, cultural events and major festivals like Dashera, Diwali and Christmas. According to historians, the fireworks originated in the 2nd century BC in ancient Liuyang, China. It is believed that the first natural firecrackers were the bamboo stalks that were thrown in a fire would explode with a bang due to the overheating of the hollow air pockets in the bamboo. The Chinese name for firecrackers, Baozu, literally means exploding bamboo.
साथियों नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रसिद्ध लेखकों में से एक हैं। उन्हें विशेषतः निबंधकार और आलोचक के रूप में जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, साथ ही कहानी और कविताएं भी लिखी। तो आइए नजर डालते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन पर। यह है उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले का अगोना गांव। यहाँ चंद्रबली शुक्ल के घर 4 अक्टूबर सन 1884 को एक बालक का जन्म हुआ। पुत्र आगमन से घर में उल्लास फैल गया। नाम रखा गया रामचंद्र। चंद्रबली शुक्ल सरकारी नौकरी करते थे। रामचंद्र शुक्ल के 2 पुत्र केशवचंद्र, गोकुलचंद्र और 4 पुत्रियां दुर्गावती, विद्यावती, लीलावती और कलावती थी। मिर्जापुर आने पर पिता ने रामचंद्र शुक्ल का दाखिला एंग्लो संस्कृत जुबली स्कूल में कराया। वह स्कूल में मन लगाकर पढ़ते थे। यहीं से उन्होंने सन 1898 में मिडिल की परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने सन 1901 में मिर्जापुर के लंदन मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा पास की। रामचंद्र शुक्ल की लिखावट बहुत सुंदर थी और वे यदाकदा पिता की सहायता के लिए खूबसूरत नक्शे बनाया करते थे। मम्मी जी, मैं बाहरले मुल्क जाने से परसों जहाज चढ़ रहा। ना पुत ना, मैं नहीं तेनू जान देना। मेरा जी घबरा रहा पुत। तेन पूछ के जान का फैसला किया सी, हुण की हो गया? ओ सुखो आई सी, दस रही सी कि ओदा मुंडा बाहरले मुल्क जाके फस गया। 16 घंटे काम कराया ते तनखा देती अद्धी। दस पुत्र, मैं तेनू किवें जान दियां? ओदा पासपोर्ट भी ले लिया, ओनू मारिया कुटिया भी। मम्मी जी, मैं नहीं चाहती तेरे नाल भी इदा होवे। मम्मी जी, वो मूर्ख किसी नकली एजेंट राही चल गया हो। मैं तां पूरी पुछ पड़ताल करके जा रहा। मेरे एजेंट का नाम सरकारी लिस्ट च दर्ज है। सारे कागज चेक करा ले। मैं पासपोर्ट की कापी, एजेंट का नाम ते नंबर तेरे को छड्ड के जावांगा। अपना काम भी चंगी तरह सीख लिया मैं, ते उत्थों दी थोड़ी जी बोली भी सीख ली है। इस करके मैं नहीं फसन वाला। पर पुत्र, तेरी तो कोई जान पहचान भी नहीं उथे। मम्मी जी, उथे भारत सरकार का दफ्तर है जिन्नू दूतावास कहंदे ने। मैं जांदे ही उन्हां नाल संपर्क करांगा। तुसी जरा भी फिक्र ना करो मम्मी जी, सगों मैनू खुशी खुशी भेजो। जी हाँ, बाहरले मुल्क च नौकरी पाओ तां सुरक्षित जाओ, सिखलाई शुदा जाओ। जांदियां ही भारती दूतावास नाल संपर्क करो। बाहरले मुल्क च तुहाडा दोस्त भारती दूतावास। मित्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे संत कबीर की। कबीर जो आज 600 वर्षों के बाद भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने वे तब थे। आखिर ऐसा क्या है कबीर में? क्यों हमें आज भी पग पग पर कबीर याद आते हैं? क्यों आज भी उनकी साखियां, सबद और रमैनी हमारे कानों में गूंजती हैं, हमें कुछ सोचने, कुछ गुनने पर विवश करती हैं? दरअसल कबीर के अनेक रूप हैं। एक वह रूप है जिसमें वो अपने चिंतन से जग को चौंकाते हैं। दूसरा रूप संत कबीर का है जहां वह जीव और परमात्मा के गूढ़ संबंध की व्याख्या करते हैं। निर्गुण भक्ति के पक्ष में वातावरण बनाते हैं। माया और ब्रह्म को बड़े सरल तरीके से समझाते हैं। उनका एक रूप समाज सुधारक का है जहां वो समाज को रूढ़ियों से निकालने की कोशिश करते दिखते हैं। एक रूप व्यंग्यकार का है, उस व्यंग्यकार का जो सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों पर तीखा प्रहार करता है। एक रूप कबीर का मानवतावादी रूप है। उनका वो व्यक्तित्व अपनी सादगी, अपनी निडरता, अपनी निर्लोभता को लेकर एक आकर्षण जगाता है, मनुष्य मात्र को प्रेरणा देता है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होए।
कांगड़ा घाटी अपने प्राकृतिक सौंदर्य, असीम वन संपदा, वन्य जीव जंतु, उच्च पर्वत शिखर एवं कलकल बहते नदी नालों के कारण देवताओं को भी अत्यंत प्रिय है। इसीलिए यहाँ पर अनेक देवी देवताओं का वास है। कांगड़ा क्षेत्र में मां चामुंडा की बहुत मान्यता है। प्रसिद्ध चामुंडा देवी मंदिर बाणगंगा नदी के तट पर पालमपुर से लगभग 10 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। हिंदू धर्म में चामुंडा देवी अति पूजनीय हैं। चामुंडा दो शब्दों चंड और मुंड से लिया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार चंड और मुंड राक्षसों ने भगवान शिव की कठिन तपस्या कर अमृत्य का वरदान प्राप्त किया और विजय के मद में चूर होकर देवी देवताओं को परेशान करना शुरू किया। सभी देवता मां दुर्गा की शरण में गए। मां दुर्गा ने चंड और मुंड राक्षसों का वध करने के लिए अपनी शक्ति से एक देवी को बनाया। उस अपार शक्ति देवी ने राक्षसों को मार डाला। देवी दुर्गा राक्षस वध से खुश हो गईं और उन्होंने शक्ति देवी को आशीर्वाद दिया कि उनको चामुंडा के रूप में जाना जाएगा और पूजा की जाएगी। मिठाई के साथ मटर के दाने? हाँ, ये सब तुम्हारे लिए हैं। लेकिन क्यों? माँ कहती है मटर के दाने शक्ति और बल का प्रतीक है। ये एक प्रथा है भाई, ताकि तुम हमेशा बलशाली रहो और वक्त पड़ने पर मेरी रक्षा कर सको। पर मुझे क्यों? ताकि तुम सक्षम बनो और अपनी रक्षा खुद कर सको बिना किसी मदद के। तुम्हारी सोच है औरों से जुदा। क्योंकि मेरी बहन है सबसे जुदा। आपकी बेटी भी है आपके बेटों के बराबर, उसे समान रूप से दे फलने फूलने का अवसर। सोच नहीं अपनाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। Tripura is one of the 7 sister states of Northeast India. It is small, but it is home to a number of tribes. Tripura is close to the Bangladesh border and it has Assam and Mizoram to the east. The state has a large mix of tribes including the Tipra, Riang, Chakmas, Jamatia, Mog, Munda, Kuki, Garo and the Halam. Energy is the major source for the economic development of any country. In recent years, India's energy consumption has been increasing at a relatively fast rate due to population growth and economic development. Solar energy has been in use for a long time in India, where solar energy has been found to be very promising and has shown its significant utility. Solar panels actually comprise many small units called photovoltaic cells that convert sunlight into electricity. Each photovoltaic cell is basically a sandwich made up of 2 thin layers of different types of semiconducting material, usually silicon. Many cells linked together make up a solar panel. At Terry Deacon Nanobiotechnology Center, scientists have developed a process for fuel production from algae, which has shown a great potential in clean and green energy. The algae thus harvested is in the form of a slurry, concentrated to a thick paste. This slurry, with further processing, is converted as the fuel for vehicles. The India Meteorological Department, IMD, is mandated to take meteorological observations and provide forecasts for weather-sensitive activities like agriculture, irrigation, shipping, aviation, tourism, oil exploration and sports.
It also aims to warn against severe weather phenomena like tropical cyclones, heavy rains, heat and cold wave, etc. It has come a long way from its modest beginnings in 1875, with the last decade playing a pivotal role in its development. There has been significant improvement in early warning services in recent years. IMD has earned continuous global acclaim and appreciation for their round-the-clock and timely report. IMD earned appreciations for heavy rainfall warning for Chennai flood in 2015, Gujarat flood in 2017, Cyclone Hudhud in 2014, Varda in 2016 and cyclones Sagar, Mekunu, Luban, Titli and Petai in 2018. Various observational tools like satellites, automatic weather stations, radar, etc. provide timely inputs and round-the-clock monitoring for any severe weather event. नाली मेड़ बनाने का यंत्र एक सरल मेहनत में कमी लाने के लिए उपयोगी यंत्र है। महिलाएं इस यंत्र का उपयोग खेत में नाली मेड़ बनाने के लिए कर सकती हैं। बीज उपचार ड्रम किसान महिलाओं को रसायनों को बीज के साथ मिलाने में मदद करता है। इस प्रक्रिया में रसायन को हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ड्रम के घूमने के कारण रसायन समान रूप से बीज के साथ मिश्रित हो जाता है। नवीन डिबलर एक बीज बोने का यंत्र है। इस डिबलर के प्रयोग से खड़े रहते हुए खेत में मोटे बीज जैसे कि मक्का, सोयाबीन, अरहर, कपास आदि बोए जाते हैं। इस कार्य में झुकने की जरूरत नहीं होती है और पीठ दर्द से छुटकारा मिलता है। बीज बोने के लिए रोटरी डिबलर भी उपलब्ध है। बीज बुआई यंत्र छोटे किसानों द्वारा मध्यम और मोटे बीजों की बुआई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे ज्वार, अरहर, सोयाबीन, मक्का, गेहूं, चना आदि। इसके प्रयोग में झुककर काम नहीं करना पड़ता है। Nearly everything that a human does is in response to the environment. Man and environment are interrelated. Maintenance of ecological balance and preserving biodiversity has been the utmost importance to NTPC, the largest power producer of the nation. With a total installed capacity of 47,228 megawatts, NTPC Vindhyachal is one of the jewels in the crown of NTPC. It is the largest power station in the country. भारत में कृषि व्यवसाय नहीं बल्कि जीवन पद्धति है। भारत की संस्कृति का आधार कृषि रहा है और हमारे पूर्वजों द्वारा करीब 10,000 वर्ष पहले शुरू की गई कृषि का आधार हमारे पारंपरिक
बीज रहे हैं। जब खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं तो अच्छी गुणवत्ता वाले बीज मानव के अस्तित्व के लिए सबसे अहम हो जाते हैं। बढ़ती आबादी की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जरूरी था कि खेती गुणवत्ता वाले बीजों पर आधारित हो और इसी के तहत 1963 में NSC यानी राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई। सन 1966 में NSC द्वारा मेक्सिको से लाए गए बौने गेहूं की प्रजाति का वितरण किया गया, जिससे हमारे किसानों ने सिर्फ 2 साल में गेहूं की पैदावार चौगुनी बढ़ाकर हरित क्रांति कर दी। तब से भारतीय कृषि वैज्ञानिकों और किसानों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। The Border Roads Organization develops and maintains road networks in India's border areas and friendly neighboring countries. This pioneer national organization is fondly known as BRO. Was formed in 1960 by the Government of India. The sole motto of BRO is to provide road connectivity to meet the operational and strategic requirements of the armed forces in the border areas. मानव स्वभाव आदिकाल से विकास की भावनाओं से प्रेरित रहा है। पाषाण युग से लेकर आधुनिक युग तक वो इस भावना को उत्तरोत्तर पोषित करता चला रहा है और इस भावना को बलवती कर रही है उसकी विरासत और उसकी उपलब्धियां। इस पृष्ठभूमि को धारण किए सिंगरौली क्षेत्र वास्तव में काफी समय पूर्व इस वृत्तांत को एक नई दिशा देने के मार्ग पर निकल पड़ा है और वो नई दिशा है सर्वोन्मुखी विकास की। इस क्षेत्र की पौराणिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत में जुड़ चुकी है एक और विरासत। ये विरासत है समग्र विकास की जीवन रेखा, शक्ति का भंडार। Life on Earth is the greatest gift of nature, and so are the abundant natural resources. Necessity being the mother of invention, over centuries, humans have been harnessing these natural resources for their survival. With the pace of time and also realizing the future world of green and clean energy, SJVN also took timely initiatives in harnessing the natural sources of energy to generate electricity. Welcome to BHP Billiton, New Delhi. At BHP Billiton, New Delhi, we are committed to health, safety, environment and community. It is our goal to achieve zero harm to our employees, contractors, visitors, the environment and the communities in which we work. As employees of BHP Billiton, this begins with zero harm to you. This video will familiarize you with our in-house safety emergency procedures and office policies. If you have any questions after watching this video, please contact your host for assistance. The building has one entry and one exit, separately located on Connaught Place Outer Circle Street and Parliament Street.
As per survey conducted by Tripura Garo Union, population of Garo in Tripura as on 2016 is 16,086 numbers. Number of families 2,681, males 8,227 numbers, and female 8,059 numbers. The tribe is one of the few matrilineal societies in the entire world. Titles are inherited from the mother and the daughter receives land or property as generations pass. The son usually leaves his parents' home and train themselves at Nook Pantis, which is a bachelor's village dormitory. The boy returns to his wife's home after marrying. The Garo cultural heritage is very diverse. They are known for their wide expanse of handcrafted ornaments, weapons, and distinctive architectural styles that befits purposes of the community. There's a traditional dress of the tribe named Takamanda. It looks fabulous when adorned with their colorful handcrafted ornaments. एनटीपीसी अपने मजदूरों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है। इसके प्रत्येक कंस्ट्रक्शन साइट पर खासकर ऊंचाई पर काम करने वाले मजदूरों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा का पूरा इंतजाम रखा जाता है ताकि कोई अप्रिय घटना या फिर दुर्घटना न घट सके। ऊंचाई पर काम करने का मतलब ऐसी ऊंची जगह पर काम करना है जहां पर यदि सावधानी से काम नहीं किया गया तो किसी भी तरह की बड़ी दुर्घटना घट सकती है। किसी भी मजदूर को चोट लग सकती है और उसकी जान भी जा सकती है। ऊंचाई पर काम करते हुए एक मजदूर या कर्मचारी को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है क्योंकि कहते हैं कि सतर्कता हटी दुर्घटना घटी। कभी भी किसी ऊंचे प्लेटफॉर्म, स्कैफोल्ड, बीम या किनारों पर आराम करने या सोने की कोशिश न करें। ये घातक साबित हो सकता है। सतर्क रहने का मतलब पूरी सावधानी बरतना, ऊंचाई पर काम करने के सुरक्षा के साधनों तथा नियमों का कड़ाई से पालन करना और बिना ध्यान बांटे हमेशा सचेत रहना है। Beauty and grandeur of Masroor temples. The unique spectacular beauty of the nature fills us with real joy. In the imaginative human mind, this joyful experience results into some of the most beautiful creations or compositions. Certainly, imagination plays a pivotal role in creativity. Himachal Pradesh is present on India's cultural map with the aura of a glorious history. One can still see the remains of this glorious heritage in the forms of temples, forts and palaces in and around Kangra, Chamba and Shimla. The famous Masroor temple, situated in the Masroor village near Dehra of the Kangra district, is known as the Khajuraho Himalaya. With a mission, CSIR Institute of Microbial Technology specializes in delivering innovative solutions for India's unmet medical and societal needs. IMTech
is Asia's pioneering research and development institute, serving the nation for last 3 decades. Energized with highly motivated scientists, supported by well-trained technical staff and graduate students, and a truly world-class R&D ambience, IMTech is one of the youngest of the 37 national laboratories of the Council of Scientific and Industrial Research in India.